ये एग्जाम्पल 1999 का है. फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन del square z upon del x square plus del square z upon del y square is equal to e to the power minus x cos y, which tends to 0 as x tends to infinity and has the value cos y when x is equal to 0. तो ये एग्जाम्पल जो अभी तक हमने किया उनसे डिफरेंट है और वी विल बी यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस और PI एंड ये कंडीशंस अप्लाई करेंगे. देखते हैं सॉल्यूशन. पहले PI देन CF एंड टोटल सॉल्यूशन विल बी CF प्लस PI. PI इज 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस d डैश स्क्वायर e टू द पावर माइनस x cos y. अब यहाँ पर हम नॉन होमोजीनियस में एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसके अकॉर्डिंग e टू द पावर माइनस x को लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई. तो यहाँ पर फॉर्मूला है, अगर फंक्शन एफ एक्स वाई वी e टू द पावर ax प्लस बी वाई के फॉर्म का है, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन एफ डी डी डैश वी e टू द पावर ax प्लस बी वाई है. तब ये होगा e टू द पावर ax प्लस बी वाई 1 अपॉन एफ डी प्लस ए एंड डी डैश प्लस बी वी. सो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसे लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस 1 एक्स प्लस 0 वाई 1 अपॉन डी माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस डी डैश प्लस 0 होल स्क्वायर cos y. So this becomes e to the power minus x 1 upon d square plus d dash square minus 2d plus 1 cos y. तो ये भी नॉन होमोजीनियस का फॉर्मूला है कि जब फंक्शन जो है cos ax प्लस बी वाई के फॉर्म का है उस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा एफ डी डी डैश में, जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ माइनस ए स्क्वायर रखेंगे, जहाँ डी डैश स्क्वायर है वहाँ माइनस बी स्क्वायर एंड डी डी डैश इज इक्वल टू माइनस ए बी. सो दिस विल बिकम here a is 0 and b is 1 because cos ax plus by is equal to cos y. So this gives e to the power minus x 1 upon d square is 0 plus d square is minus b square, so minus 1 square minus 2d plus 1 cos y. So this comes e to the power minus x upon, so we got this value and it is equal to e to the power minus x. This is minus 1 and plus 1, so only thing is minus 2d cos y. It means we have to integrate with respect to x because d is there, so e to the power minus x by minus 2, x is there into cos y because we are integrating 1 with respect to x, so we got x. Now this is PI and we have to find out general solution which is CF and PI. So CF plus PI, we got PI. For CF we have to find out solution of del square z upon del x square plus del square z upon del y square is equal to 0. इसका जो solution होगा वो CF होगा. In this question some conditions have been given. That condition we will apply on PI also and we will see what is the value of PI in that case when condition is applied. So we see the condition is given that it says that when x is equal to 0 the solution is z which is function of xy is equal to cos y, and when x is tending to infinity zxy is also tending to 0.
So these two conditions are there, 1 and 2. Now first we find CF of this, and then we will see with respect to these conditions. This question is different in few aspects, like here we have applied different rules for PI, this one, and for cos AX plus BI also we have applied these rules. And here also we are not going to find out CF as we do method of separation, which we do for solving PDE, जो कि हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम यूज करते हैं. सो हम यहाँ वो मेथड अप्लाई करते हैं. सो दिस इज, वी एज्यूम ZXY is equal to XX YY. This is function of X and function of Y, and we differentiate it with respect to X twice and with respect to Y twice. So del square Z upon del X square is X double dash X Y Y, and del square Z upon del Y square is X X Y double dash Y. We put these values in the equation, in this equation, and we get XX X Y Y is equal to, we take on minus side, this becomes Y double dash Y, and XX dash is showing derivative and double dash means second derivative. So we can write, we separate the variables, X double dash X upon XX is equal to, this will minus Y double dash Y upon YY, small x and y are independent variables. So this expression will be true when this is equal to constant, and for that we take it as n square, because in question it is given cos y, so we will take positive n square is equal to minus y double dash y upon y. We take it n square, and cos y is given, so we take positive n. Now this can be, dash is showing derivative, so d square x upon dx square is equal to cross multiply n square x variable of x, and second equation will be d square y upon dy square is equal to minus n square y. So from here auxiliary equations, d square minus n square is 0, from here d square plus n square is 0, and we get d is equal to plus minus n, here d is equal to plus minus ni. So we get value of xx is a e to the power nx plus b e to the power minus nx, and in this case this becomes y is equal to c cos ny plus c sin ny. Now we see the conditions and what is the value of pi in that condition and how we will take that in CF. So condition is given that x is equal to 0, then zxy is equal to cos y, this is given, and x tends to infinity, zxy tends to 0. It means what happens when x tends to infinity, we can write zxy is equal to 0. So what happens when x tends to infinity in the case of pi? Pi when x tends to infinity, because we have already calculated that, so this happens, pi is equal to minus 1 by 2 x e to the power minus x cos y. So only thing we have to check for it. So what happens, limit x tends to infinity, x e to the power minus x is limit x tends to infinity, x upon e to the power x. So this is 0, in denominator it is infinity, so this is equal to, we know this is equal to 0. So in the case when x tends to infinity, this is pi is 0.
It means when we are talking about x tends to infinity, we are talking about only CF, because PI is 0 if x tends to infinity. So we are discussing about only CF. What happens now? We have been given the auxiliary equation has given x is equal to a e to the power nx plus b e to the power minus nx. So if x is tending to infinity, this term will tend to infinity, which we don't want. So a has to be 0. It means xx is equal to, because if it is infinity, zxy will be infinity, which is wrong. So we cannot consider this. This is wrong. A has to be 0, so xx is equal to b e to the power minus nx. We put the value of this y and x in the solution. So zxy is equal to e to the power minus nx into y, because we had taken x into y. So c cos, b into c we write e cos ny plus f sin ny. This becomes, we put x is equal to 0, so it gives, when we put x is equal to 0, zxy is equal to cos y. So cos y, this is e to the power minus 0, which becomes 1 into e cos ny plus f sin ny. Now this is cos y. इसके लिए कंडीशन क्या होगी? n should be 1. If n is 1, e is 1 and f is 0, उसी केस में ये cos y हो सकता है. So in that case it is cos y. So we got the value of CF as e to the power minus n is 1, so x, and e is 1 cos y, and rest is 0. So this is CF. So we got PI. So z is equal to CF plus PI, e to the power minus x cos y plus PI is minus half x e to the power minus x cos y. So this is the solution. अभी तक जो हमने एग्जाम्पल्स किए हैं उसमें हमने देखा कि आर्बिट्रेरी फंक्शंस जो हैं एक्स एंड वाई को इन्वॉल्व करते हैं, और अब हम ज्योमेट्रिकल कंडीशंस में देखते हैं कि प्रॉब्लम ज्योमेट्रिकल कंडीशंस को इन्वॉल्व करती है, तब उसे कैसे सॉल्व करेंगे. तो पहला एग्जांपल है जो कि 1996 में आया था. PYQ है 1996 का. फाइंड ए सरफेस पासिंग टू लाइंस z is equal to x is equal to 0 and z minus 1 is equal to x minus y is equal to 0, satisfying r minus 4s plus 4t is equal to 0. तो इक्वेशन को पहले हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं. r हमें पता है डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 4 एस इज डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस 4t डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी अगर हम लिखें तो दैट विल बी डी स्क्वायर माइनस 4d डी डैश प्लस 4d डैश स्क्वायर z इज इक्वल टू 0. सो ये है d माइनस 2d होल स्क्वायर z इज इक्वल टू 0. सो d की यहाँ पर हमें दो वैल्यू मिल जाती हैं. d इज इक्वल टू m एंड d डैश इज 1. सो m इज इक्वल टू 2 एंड 2 रिपीटेड रूट्स हैं. सो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, और वी कैन से सॉल्यूशन इज z इज इक्वल टू 5 1 y प्लस 2x एंड प्लस क्योंकि रिपीटेड है x 5 2 y प्लस 2x 5 1 5 2 आर्बिट्रेरी फंक्शंस. नाउ दिस z इज इक्वल टू 5 1
एंड phi 2 के टर्म में दिस passes, this is equation 1 से, so equation 1 passes through the lines z is equal to x is equal to 0. First we take this, अगर ये हम वैल्यू रखते हैं तो 0 because z is 0 is equal to phi 1 y and next में x है तो this will be 0, so only this much. It means phi 1 y plus 2x, if we add something to it, is equal to 0. So z is equal to x phi 2 y plus 2x. This is, let's say, 2. Now this 2 passes through z minus 1 is equal to x minus y is equal to 0. It means z is equal to 1 and x is equal to y. So we put these values. So 1 is equal to x phi 2 3x. It means phi 2 3x is equal to 1 upon x, and we multiply in numerator and denominator by 3, so 3 upon 3x. So phi 2 3x is equal to 3 upon 3x we can write down. It means phi 2 y plus 2x is equal to 3 upon y plus 2x. So our solution is 3x is equal to zy plus 2x. Z is equal to 3x. From 2 we have written z is equal to x phi 2 y plus 2x. इसमें हमने phi 2 y plus 2x की वैल्यू रख दी 3 upon y plus 2x. So this becomes 3x upon y plus 2x. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया एंड दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. एक और क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं एंड देन दिस चैप्टर इज ओवर. नेक्स्ट एग्जाम्पल, find a surface satisfying r minus 2s plus t is equal to 6 and touching the hyperbolic paraboloid z is equal to xy along its section by the plane y is equal to x. So इक्वेशन को हम पार्शियल फॉर्म में लिखते हैं. डेल स्क्वायर z अपॉन r इज del x square minus 2s is del square z del x del y plus t del square z upon del y square is equal to 6. ऑक्सिलरी इक्वेशन है d square minus 2d d dash plus d dash square is equal to this z6. So we can write down d minus d dash whole square z is equal to 6. So m minus 1 whole square is equal to 0, m is equal to 1 and 1. Repeated root. So complementary function is phi 1 y plus x phi 2 y plus x. phi 1 phi 2 arbitrary. Now pi निकालना है, that is 1 upon d minus d dash स्क्वायर 6. पहले क्वेश्चन में पी आई की ज़रूरत नहीं हुई क्योंकि वहाँ पर राइट हैंड साइड 0 दिया गया था. सो दिस इज, वी टेक डी स्क्वायर कॉमन, 1 अपॉन डी स्क्वायर 1 माइनस डी डैश अपॉन डी होल स्क्वायर मीन्स वी टुक डी कॉमन एंड स्क्वायर ऑफ दैट इज डी स्क्वायर एंड देन हेयर इट इज 6. सो 1 अपॉन डी स्क्वायर, उसे एक्सपेंड करेंगे. सो 1 प्लस 2 डी डैश अपॉन डी एंड सो ऑन 6. दिस इज 1 अपॉन डी स्क्वायर 6 विच कम्स 3x square because first it will be x
6x इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू, एंड देन x का होगा x स्क्वायर बाई 2, 6 कैंसिल आउट हुआ, सो 3x स्क्वायर. सो जनरल सोल्यूशन हमारा फाइंड आउट हो गया CF प्लस PI विच इज इक्वल टू 5(1) y प्लस x प्लस x 5(2) y प्लस x प्लस 3x स्क्वायर. अब जो सरफेस है, दिस इज इक्वेशन 1. दिस इक्वेशन 1 touches the given surface. This is also a surface, touches the given surface. Z is equal to xy and this is Z. General solution क्या है? Z. Along the section y is equal to x. The values of P and Q for two surfaces must be equal for any point on the plane. So values of P and Q should be same or must be equal for any point on the plane. On the plane y is equal to x. तो P क्या है? डेल Z अपॉन डेल x एंड Q है डेल Z अपॉन डेल y. तो हम निकालते हैं वैल्यूज P एंड Q की एंड इन्हें इक्वल सब्सटीट्यूट करते हैं. P and Q for two surfaces must be equal for any point on the plane y is equal to x means that point is on both the surfaces, means touching point. It means P is del Z upon del x is equal to, we are differentiating, so first term is 5y plus x, it gives 5(1) dash y plus x plus this is product of two functions. So 5(2) y plus x plus x 5(2) dash y plus x plus 3x square is 6x and this is equal to y and q is equal to, we are differentiating with respect to y, x 5(2) dash y plus x. x तो जो है कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा प्लस 5(1) dash y plus x. दिस इज इक्वल टू x बिकॉज z इज इक्वल टू xy भी दिया गया है. सो यहाँ से अगर हम लिखें डेल z अपॉन डेल x, दिस इज इक्वल टू y एंड डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल टू x. सो ये वैल्यूज जो ये लिखी गई हैं, दिस इज फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन. If we subtract, this will cancel out, this will also cancel out. Only thing 5(2) y plus x and y is equal to x, this becomes 5(2) 2x and this term is here, so this is plus 6x is equal to y minus x. So this is 0. So 5(2) y 2x plus 6x is equal to 0. It means 5(2) 2x is equal to minus 6x, which is equal to minus 3 into 2x. So we write 5(2) x is y, so we break it, y plus x is equal to minus 3y plus x. And if we differentiate with respect to y plus x as a whole, this comes 5(2) y plus x is equal to minus 3. Then we use this equation, q is equal to x, this is equal to x 5(2) dash y plus x is minus 3. In this we put plus 5(1) dash y plus x. So we get x
is equal to minus 3x plus 5 dash y plus x 5 dash, this becomes 4x 5 dash y plus x is equal to 4x. So x is equal to y. This can be written 2 into 2x. So 5 dash 2x is equal to 2 into 2x. And using this we can write down 5 dash x is equal to 2x. We integrate it. Integrating 5 1 x is equal to x square by 2, so x square plus c, and 5 1 y plus x, x को y plus x से replace कर दिया, it is y plus x whole square plus c. Now we put the values of phi 2 y plus x and phi 1 y plus x in equation 1. This gives z is equal to, equation 1 was the general solution is equation 1. So z is equal to phi 1 y plus x, and phi 1 y plus x is y plus x whole square plus c plus x into phi 2 y plus x, x into phi 2, we got phi 2 y plus x is here, minus 3 y plus x plus 3x square. We simplify it. Z is equal to y square plus x square plus 2yx plus c minus 3xy minus 3x square plus 3x square. So this cancels out. This is x square plus y square 2xy, and this is minus, so minus xy plus c, and this is equal to xy also क्वेश्चन में दिया गया है. So यहाँ से हम लिख सकते हैं x square, we put y is equal to x, so this gives x square is equal to x square plus x square minus x square plus c. So this cancels out, c is equal to 0. Therefore the required solution is z is equal to x square minus xy plus y square, c is 0. So this is the answer. So इसके साथ ही ये homogeneous linear partial differential equations with constant coefficients finish हो गया. Next topic है non homogeneous linear partial differential equations with constant coefficients.